Okay, Assalamu alaikum students. I hope all of you are doing well. So let's get started with May June 2024 alternate to practical paper 6 variant 3. तो पहला सवाल देखते हैं. This is IGCSE physics. I hope you guys can realize. अच्छा. A student determines the density of modeling clay by two methods. Okay, a student is determining the density of modeling clay by two methods. Perfect. He uses the block of modeling clay shown in figure 1.1. Okay. Measures the dimension of the block of modeling clay shown in figure 1.1. Record the values in centimeters to the nearest millimeter. अच्छा जी, आप L की वैल्यू, H की वैल्यू और W की वैल्यू मेजर कर रहे हो ऑफ द मॉडलिंग क्ले. परफेक्ट. तो यू हैव टू मेजर दीज वैल्यूज एंड राइट इट इन हेयर. तो मैंने ऑलरेडी मेजर कर ली हैं. L की वैल्यू कम्स आउट टू बी 6.2 सेंटीमीटर. बेटा W की वैल्यू क्या आ रही है? W की वैल्यू कम्स आउट टू बी 3.0 सेंटीमीटर. ओके. H की वैल्यू क्या आ रही है? 2.4 सेंटीमीटर. नाउ कैन यू रियलाइज आई हैव रिटन ऑल ऑफ दीज टिल वन डेसिमल प्लेस. ऐसा क्यों किया है सर आपने? बिकॉज द एग्जामिनर आस्क्ड मी टू राइट माय आंसर टू द नियरेस्ट मिलीमीटर. बेटा एग्जामिनर ने मुझे कहा है कि नियरेस्ट मिलीमीटर तक लिखो, तो मैं सेंटीमीटर में वन डेसिमल प्लेस तक लिख दूंगा आंसर. Let's further move ahead. Now you have to calculate the volume VA of the block. How will we do that? VA is equals to length into width into height. Length क्या है 6.2, width क्या है 3, height क्या है 2.4. What does your volume का answer comes out to be? The volume का answer comes out to be 44.6 centimeter cube. Simple. Suggest why the value of VA is only an approximation of the volume of the block. Describe how the accuracy of VA can be improved. यार accuracy of VA किस तरह improve की जा सकती है? First of all, why is this answer of VA only an approximation? बेटा ये जो आंसर आया है VA का, ये approximation क्यों है? Because can you see we have irregular sides, we have rounded off sides. ये देखो irregular sides है. These irregular sides make it difficult to measure the dimensions accurately. ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लो difficult, difficult to measure irregular dimensions. Difficult to measure what? Difficult to measure irregular dimensions. अच्छा जी, इसकी improvement क्या हो सकती है? What could be the improvement of this? Repeat the measurements in several places and then take average. Improvement क्या हो सकती है? Repeat the measurement in several places and then take average. Simple as that, nothing complicated here. आगे बढ़ते हैं बेटा. अच्छा जी, क्या लिखा हुआ है? रिकॉर्ड द मास MA ऑफ द ब्लॉक शोन ऑन द टॉप पेन बैलेंस. मास MA क्या हो जाएगा भाई? 80.4 grams. Perfect. Okay. Calculate a value of density for the modeling clay. Use your answer to A part 2 and C. अच्छा जी, डेंसिटी की वैल्यू निकालनी है. डेंसिटी इज मास ओवर वॉल्यूम. मास क्या था भाई? 80.4. वॉल्यूम एज फार एज आई रिमेंबर वाज 44.6. कैन यू कैलकुलेट द डेंसिटी? हाँ जी, डेंसिटी कम्स आउट टू बी, इफ आई टेक आउट अ कैलकुलेटर, 1 second. Density comes out to be 80.4 divided by 44.6, 1.8. और यूनिट्स क्या हो जाएंगे? यू हैव टू इंक्लूड द यूनिट्स एज वेल. कैन यू रियलाइज द मास इज इन ग्राम्स, वॉल्यूम इज इन सेंटीमीटर क्यूब. यूनिट्स क्या हो जाएंगे? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. लेट्स फर्दर मूव अहेड. द स्टूडेंट यूजेज अ स्मॉलर ब्लॉक ऑफ मॉडलिंग क्ले. अच्छा जी, स्टूडेंट जो है स्मॉलर ब्लॉक ऑफ मॉडलिंग क्ले यूज कर रहा है. ठीक है. Records the weight WB of the block of modeling clay shown in figure 1.3.
अच्छा जी, आप वेट रिकॉर्ड कर रहे हो, दिस कम्स आउट टू बी अराउंड अबाउट 0.35 न्यूटन, तो ये हमने लिख दिया. ओके. द स्टूडेंट pours water into a measuring cylinder and records the volume V1 of the water in the measuring cylinder shown in figure 1.4. अच्छा जी, आपने वाटर का वॉल्यूम मेजर करना है V1. ऑलवेज रिमेंबर, यू मेजर द वॉल्यूम फ्रॉम द बॉटम मिनिस्कस. बेटा हमेशा याद रखो, आप वॉल्यूम की रीडिंग कहाँ से लेते हो? बॉटम मिनिस्कस से. तो व्हाट इज दिस रीडिंग? ये रीडिंग क्या बन रही है ऑन द बॉटम मिनिस्कस? 50, 52, 54, 56. What is the value of V1? 56 cm cube. हमेशा याद रखो, whenever you are reading, let me write this key point. Always read the bottom meniscus. हमेशा bottom वाला curve या bottom वाला meniscus read करना. Always read the bottom meniscus when taking the reading from measuring cylinder. जब भी आप मेजरिंग सिलेंडर से रीडिंग ले रहे होगे, ऑलवेज टेक द बॉटम मिनिस्कस. हमेशा बात को याद रखो ये. चलो जी आगे बढ़ते हैं. डिस्क्राइब ब्रीफली हाउ अ मेजरिंग सिलेंडर इज रेड टू ऑब्टेन अ वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर. बेटा अब ये हमसे यही पूछ रहा है. हाउ विल यू रीड अ मेजरिंग सिलेंडर टू ऑब्टेन अ वॉल्यूम वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर? फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कहोगे? यू रीड द बॉटम मिनिस्कस एंड make sure that your line of sight is perpendicular to the reading. So you will say, make sure that the line of sight is perpendicular to the bottom meniscus. Simple. Make sure that the line of sight is perpendicular to the bottom meniscus. Perfect. आगे आ जाओ. The student lowers the modeling clay into the water as shown in figure 1.5. अच्छा जी, modeling clay को आप water में lower कर रहे हो as shown in figure 1.5. What is this reading? फिर आप bottom में इसका से read करना शुरू करो. What will be this reading? 70, 72, 74. Okay, आगे बढ़ते बेटा. Calculate the value of density of B for the density of modeling clay. Use your value of V2. योर आंसर फ्रॉम डी एंड. ठीक है ये सारी चीज़ें आपने यूज़ करनी है. डेंसिटी ऑफ बी निकालनी है. हाउ विल यू डू दैट? WB इंटू के V2 माइनस V1. भाई वेट आपका क्या आ रहा था? आई थिंक वेट आपका 0.35 आ रहा था. लेट मी सी. हाँ, वेट वॉज 0.35. यस, 0.35. के की वैल्यू क्या है भाई? 100 है. V2 की वैल्यू क्या है भाई? 74. V1 की वैल्यू क्या है? 56. 74 माइनस 56. What does your answer comes out to be? Hmm. एक second. This comes out to be 1.9 grams per cm cube. 1.94 लिखना चाह रहे हो, 1.9 लिखना चाह रहे हो, both will be correct. Suggest which value of density A or density B is likely to be more accurate. Justify your answer by referring to method 1 and method 2. Beta, if you realize density B will be more accurate, oh sorry, density A will be more accurate. Why? Beta, density A more accurate होगी. Why? Because in density A, क्या आप रियलाइज कर सकते हो आपने वॉल्यूम को 1 डेसिमल प्लेस तक मेजर किया? In density A, when you are measuring the volume, your volume is measured much more precisely. However, अगर आप measuring cylinder को देखो, तो आपका जो वॉल्यूम आया है that is only till 2 significant figures या 0 decimal places.
ठीक है. यू कैन से दैट द मेजरिंग सिलेंडर इज लेस प्रिसाइज. मेजरिंग सिलेंडर में आप डेसिमल्स में मेजर नहीं कर सकते वॉल्यूम को. Measuring cylinder is less precise, hence why density A is more accurate. You can say density A is more accurate because the measuring cylinder is less precise and cannot measure the volume in decimal places. Simple. आगे बढ़ते हैं. अच्छा जी. A student investigates how the volume of water affects the rate at which water in a beaker cools. अच्छा जी. Volume of water किस तरह affect करता है the cooling rate of water in a beaker. She uses the apparatus shown in figure 2.1. अच्छा जी. आप ये apparatus use कर रहे हो. Perfect. Let's zoom in a bit. Okay. You have to record the room temperature on the thermometer. What is the room temperature? This is 20. This will be 19. This will be 18. अच्छा जी. रूम टेम्परेचर क्या हो गया भाई? 18 डिग्री सेंटीग्रेड. लेट्स जूम आउट अ बिट. अच्छा देखते क्या लिखा हुआ है. The student pours a volume of 200 cm cube of hot water into the beaker and records the temperature of water at time t is equal to 0. She records the temperature of water in the beaker every 30 seconds. Okay. She pours out. She pours the water out and pours a volume of 75 cm cube of hot water into the beaker. The student repeats the temperature measurements for this volume of water. अच्छा जी. पहले आप 200 cm क्यूब के साथ टेम्परेचर मेजर कर रहे हो आफ्टर एवरी 30 seconds. देन यू आर मेजरिंग द टेम्परेचर विद 75 cm क्यूब ऑफ हॉट वाटर आफ्टर एवरी 30 seconds. ठीक है. Describe two precautions that can be used to ensure that the temperature reading in the experiment are as accurate as possible. बेटा जब भी आप इस तरह के एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर रीडिंग ले रहे होते हो फर्स्ट चीज़ क्या होती है? अवॉइड पैरेलल एरर. तो यू विल से make sure make sure that the line of sight is perpendicular to the reading. सेकेंड प्रिकॉशन क्या होगी बेटा? व्हाट विल बी योर सेकेंड प्रिकॉशन? सेकेंड प्रिकॉशन क्या होगी? हाँ जी. अवॉइड द थर्मोमीटर टचिंग द बीकर. अवॉइड द thermometer touching the beaker. सिंपल. आगे बढ़ते हैं. ऐड यूनिट्स टू द कॉलम हेडिंग्स. चलो भाई यूनिट्स ऐड कर देते हैं कॉलम हेडिंग्स में. दिस विल बी इन सेकेंड. दिस विल बी इन डिग्री सेंटीग्रेड. डिग्री सेंटीग्रेड. परफेक्ट. Write a conclusion stating how the volume of water affects the rate of cooling of water. Justify your answer by reference to the results. अच्छा जी. आपने बताना है हाउ डज द वॉल्यूम ऑफ वाटर इफेक्ट्स द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ वाटर. ठीक है. नाउ बेटा 200 cm क्यूब जब आपका वॉल्यूम ऑफ हॉट वाटर था व्हाट वाज योर टेम्परेचर चेंज? दिस वाज योर इनिशियल टेम्परेचर. दिस वाज योर फाइनल टेम्परेचर. जब आपका 200 cm क्यूब ऑफ हॉट वाटर था व्हाट वाज योर चेंज इन टेम्परेचर? 87.5 minus 79. Can you calculate this answer बच्चे? 87.5 minus 79. This comes out to be 8.5. जब आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर 75 cm क्यूब था दिस वाज योर इनिशियल टेम्परेचर. दिस वाज योर फाइनल टेम्परेचर. कैन यू कैलकुलेट द चेंज इन टेम्परेचर? यस. 85.5 minus 67. व्हाट डज दिस कम्स आउट टू बी? 67. या 18.5 डिग्री सेंटीग्रेड. बेटा क्या आप ये बात रियलाइज कर सकते हो that you are getting a larger temperature change when the volume of hot water is less. So what will you say? हाँ क्या कहोगे? The greater the volume of hot water,
and the lesser will be the temperature change. बेटा जितना ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर है the lesser will be the temperature change. Beaker A has a volume of 200 cm cube of hot water and beaker A, या इस तरह कर लो beaker. I think we are writing too much. You can say, is this beaker A? No. You can say beaker with 200 cm cube of hot water has a temperature change of 8.5 degrees centigrade. However, the beaker with 75 cm cube of hot water has a temperature change of 18.5 degree centigrade. Simple. आगे बढ़ते बेटा. Okay. Use your values. Use the values for 75 cm cube of water to calculate the average rate of cooling for the first 90 seconds of the experiment. अच्छा जी. Average rate of cooling निकालनी है for the first 90 seconds और ये 75 cm cube use करना है. So first of all, what is theta 0? Temperature at 0 seconds. What is theta 90? Temperature at 90 seconds. 85.5 minus 75 कर देंगे. 85.5 minus 75 divided by 90. What does your cooling rate comes out to be? And this comes out to be 0.117 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेकेंड. ये क्या आ गया 0.11 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेकेंड अगर आप इसको थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स पे लिखना चाहते हो. इफ यू वांट टू राइट इट टिल टू सिग्निफिकेंट फिगर्स दैट इज आल्सो कंप्लीटली पॉसिबल. यू कैन से 0.12 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेकेंड. दैट इज आल्सो कंप्लीटली fine. Okay, use the. Okay, so now we have to calculate the cooling rate for the next 90 seconds. अच्छा जी. Theta 90 तो हमारे पास है. What will be theta 180? Temperature at 180 degree centigrade, that is 67. 75 minus 67 कर दो. Divided by 90. What does your answer comes out to be? Answer comes out to be 0.089 degree centigrade per second. Simple, I think. Yeah, इतना ही है. चलो आगे बढ़ते. A student states that it is important to start the two experiments in B with the same initial temperature. बेटा स्टूडेंट सजेस्ट कर रहा है कि आपका इनिशियल टेम्परेचर सेम होना चाहिए. Explain whether your values for x1 and x2 support this statement. Yes. Yes, yes, yes. This is a very repetitive question. Can you realize for the first 90 seconds, your starting temperature was what? बेटा first 90 seconds के लिए आपका starting temperature क्या था? 85.5. And hence your cooling rate was what? 0.012. However, for the last 90 seconds, ये आपका starting temperature था 75. Hence your cooling rate was what? 0.089. क्या आप realize कर सकते हो that if your starting temperature is lower or if your initial temperature is lower, your cooling rate also decreases. So you can write this. Explain with yes. The starting, yeah, the initial temperatures should be same. Should be same. Because cooling rate decreases as temperature
decreases. Simple. Nothing complicated here. Another student repeats the experiment. State two variables other than the initial water temperature that he should control to obtain the readings that are as close as possible to those in table 2.1. अच्छा जी बेटा क्या चीज़ें जो है वो स्टूडेंट कंट्रोल करे फर्स्ट ऑफ ऑल द रूम टेम्परेचर द रूम टेम्परेचर फॉर बोथ द एक्सपेरिमेंट्स या फॉर एनी एक्सपेरिमेंट इन Similarity to this should be kept constant. Secondly, क्या constant रहना चाहिए? The surface area of the beaker should remain constant. Surface area of beaker should also remain constant. Surface area कह लो, size of beaker कह लो, everything works here. आगे बढ़ते हैं. A student determines the focal length of a converging lens. ठीक हो गया. The student sets up the apparatus as shown in figure 3.1. ठीक है. He is setting up the apparatus as shown in figure 3.1. ठीक है. He sets the distance u between the illuminated object and the lens as 25 centimeter. Okay, ये आपका 25 centimeter हो गया. Perfect. He places the screen near the lens and moves the screen until a focused image of the illuminated object is seen on the screen. ठीक है. Focused image बना रहे हैं of the illuminated object on the screen. Describe a technique for obtaining an image that is as sharp as possible. अच्छा जी आपने एक image obtain करनी है that is as sharp as possible. What will you do? Move the screen as slowly as possible back and forth. बेटा अगर आपको एक शार्प इमेज चाहिए तो व्हाट विल यू डू यू विल मूव द स्क्रीन स्लोली बैक एंड फोर्थ अगर आपको शार्प इमेज चाहिए अगेन आई एम रिपीटिंग यू विल मूव द स्क्रीन स्लोली बैक एंड फोर्थ यू कैन राइट मूव द screen slowly back and forth. Simple. अब आगे आ जाओ द शेप ऑफ द illuminated object and the image seen on the screen are shown full size in figure 3.2 and 3.1. ठीक है भाई shape of illuminated object and image are seen. Measure height h naught the height of the illuminated object as shown in figure 3.2. अच्छा जी आपने h naught measure करना है how will you do that using a scale बेटा स्केल से आपने एच नॉट मेजर कर लेना आई हैव ऑलरेडी डन दैट एच नॉट इज कमिंग आउट टू बी 2.0 सेंटीमीटर और एच वन क्या आ रहा है भाई एच वन आ रहा है 3.2 सेंटीमीटर सिंपल यू हैव टू कैलकुलेट डब्ल्यू डब्ल्यू कैसे निकालेंगे भाई एच नॉट ओवर एच वन 2 divided by 3.2 what does your answer comes out to be beta the answer comes out to be 0.63 simple आगे बढ़ते हैं अच्छा क्या लिखा हुआ है द स्टूडेंट रिपीट्स द प्रोसीजर फॉर यू इज इक्वल टू 20 30 40 50 60 सेंटीमीटर ठीक है आप एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर रहे हो फॉर 20 30 40 50 60 सेंटीमीटर ओके यू आर मेजरिंग द हाइट h1 एज वेल यू आर कैलकुलेटिंग w एज वेल प्लॉट अ ग्राफ ऑफ u on the y-axis w on the x-axis use the results from table 3.1 यू डू नॉट नीड टू स्टार्ट योर एक्सेस फ्रॉम ओरिजिन अच्छा जी आपने ओरिजिन से एक्सेस स्टार्ट नहीं करना सो वाई एक्सेस पे आपने क्या प्लॉट करना है बेटा ऑन द वाई एक्सेस यू हैव टू प्लॉट यू स्लैश सेंटीमीटर ऑन द एक्स एक्सेस व्हाट डू यू हैव टू प्लॉट डब्ल्यू और डब्ल्यू के यूनिट्स क्या है नो यूनिट्स परफेक्ट नाउ सर हाउ विल वी प्लॉट थिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल 1 2 3 4 5 वाई एक्सेस पे कितने लार्ज बॉक्सेस है भाई 5 ओके सो यू कैन राइट हियर वाई एक्सेस पे नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं भाई 5 what is the minimum value on the y axis 20 what is the maximum value on the y axis 60 can you calculate the scale on the y axis 60 minus 20 divided by 5 this comes out to be 8 इसको round up कर दो this will become 10 sir why have you rounded this up because always remember we plot the scale in multiples of 1 2 5 and 10 बेटा हम odd scales plot नहीं करते हम 8 8 या फिर 6 6 3 3 इस तरह की scales नहीं plot करते हम either 1 2 5 या 10 के multiples में scale को plot करते हैं ओके
तो हम 10 के मल्टीपल्स में प्लॉट करेंगे. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 20, 30, 40 एंड 50, 60 एंड 70 वुड डू द जॉब. अब एक्स एक्सिस पे आ जाओ. 1 2 3 4 5 6 एंड 6.5. एक्स एक्सिस पे आपके पास कितने लार्ज बॉक्सेस हैं? 6.5. एंड आई होप सो आप लोगों ने पिछली वाली वीडियोस देखी होंगी. मैं लार्ज बॉक्स उसको कह रहा हूँ. 10 small boxes is equals to 1 large box. एक्स एक्सिस पे कितने लार्ज बॉक्स है? यस, 6.5. So let's write that down. On the x axis we have 6.5 boxes. Okay. Minimum value क्या है भाई x axis पे? 0.4. मैक्सिमम वैल्यू क्या है बच्चा? 2.5. ओके. तो x का स्केल प्लॉट करते हैं. लेट्स डू दैट. x मैक्सिमम क्या है? 2.9. x मिनिमम क्या है? 0.4 डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ बॉक्सेस, दैट इज 6.5. Can you calculate the x scale? Yes, 2.9 minus zero point 0.4, 6.5. This comes out to be 0.38. अब अगर आपकी x की स्केल 0.38 आ गई है, obviously you wouldn't be plotting this. This is an odd scale. You will round it up till 0.5 because हम scale हमेशा multiples of 1 2 5 और 10 में प्लॉट करते हैं. तो अगर आपकी स्केल 0.38 आ रही है, आप इसको राउंड ऑफ करके या राउंड अप करके 0.5 कर दो. So you can say that this is 0, this will be 0.5, this will be 1, this will be 1.5, this will be 2, 2.5 and 3. I think this will do the job. अच्छा जी. अब जब y एक्सिस पे आपकी वैल्यू 20, x एक्सिस पे क्या है? 0.4. तो somewhere here. Perfect. You have your first point. Okay. Y-axis पे when your value is 30, x-axis पे it is 1. Somewhere here. Perfect. Y-axis पे जब आपकी value 40 है, x-axis पे it is 1.6. 1.6 is here. Perfect. Y-axis पे जब आपकी value 50 है, x-axis पे क्या है? 2.4. This is 2.4. Perfect. Y-axis पे जब आपकी value 60 है, x-axis पे 2.9 है. 2.9. तो यहाँ पे आ जाओ. Perfect. Now what do you have to draw? Draw the best fit line. अच्छा जी. Now how many points do we have? 1 2 3 4 5. 5 points. Whenever you have 5 points and you have to draw the line of best fit, what is option number 1 बेटा? Option number 1 क्या होता है? Option number 1 क्या होता है? All points on the line. क्या आप कोई ऐसी लाइन बना सकते हो जिसमें all points are on the line? I don't think so. No. No, 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 no. We cannot draw such a line जिसमें all points are on the line. Okay. ठीक है सर. Second option क्या होगा? What will be your second option? When you have 5 points, what is your option number 2? जब आपके पास 5 points होते हैं, आपका option number 2 क्या होता है? 3 points on the line. 1 point above the line. 1 point below the line. तो क्या इस तरह की लाइन बन सकती है? Let's see. Here we have it. Can you see? First point on the line, second point on the line, third point on the line. एक point above the line है, ये वाला blue वाला. 1 point is below the line. This is your line of best fit. Easy peasy. I am removing the highlighting because that looks untidy. चलो आगे बढ़ते हैं. Now you have to calculate the gradient of the line. How will you calculate the gradient of the line? Show clearly on the graph how you obtain the necessary information.
बेटा ग्रेडियंट ऑफ द लाइन निकालने के लिए आपने कोई भी ऐसे दो पॉइंट सेलेक्ट करने हैं दैट आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, मैक्सिमम फार अवे फ्रॉम ईच अदर। आपने कोई ऐसे दो पॉइंट सेलेक्ट करने हैं दैट आर मैक्सिमम फार अवे फ्रॉम ईच अदर। लेट मी टेक दीज टू पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट ले लेते हैं, दैट इज दिस इज एक्स एक्सिस में 0.4, वाई एक्सिस में 20, ठीक है। एंड second of all, let's take this point. Let me zoom in a bit. This will be x axis में what? 2.6, y axis में 55. Can you calculate the gradient? Yes. By drawing a triangle. बेटा triangle जरूर बना के दिखाना है आपने. You have to make a triangle. Points आपने label कर दिए. Now write down the points here. And 2.655. Gradient क्या आ जाएगा? 55 minus 20. What does your answer comes out to be? This comes out to be 15.9 as your gradient. ठीक है, करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा जी, हमें पता है कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू द ग्रेडियंट। फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? 15.9 सेंटीमीटर। परफेक्ट। ओके, लेट्स मूव अहेड। आगे बढ़ते हैं बेटा। क्या लिखा हुआ है? लेट्स सी। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है? इफ यू रीड आउट थोड़ा सा क्लोजली what is written. A student decides to continue the experiment using larger values of W. Explain why this procedure gives less accurate value for W. भाई अगर आप larger values of U ले लोगे तो why will this give a less accurate value of W? देखो, as you are increasing the values of U, what is happening? Your H1 is getting smaller. जैसे जैसे आप u को इंक्रीज कर रहे हो, h1 is decreasing or getting smaller. It will be difficult to measure h1. So you can write for larger values of u, h1 gets significantly smaller and difficult to measure. Simple. h1 gets significantly smaller and difficult to measure. चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, क्या लिखा हुआ है? A student investigates the relationship between the diameter. Okay, the student is investigating the relationship between the diameter of wire and electrical resistance of the wire. अच्छा जी, ठीक है, diameter versus electrical resistance के बीच में हम relationship देख रहे हैं। Plan an experiment which enables her to investigate how the diameter of a wire affects the resistance of the wire. Resistance is given using this equation. Okay. Where V is the potential difference across the wire, I is the current in the wire. The apparatus available includes wire of different known diameters. ठीक है, आपके पास different known diameters है. List any additional apparatus that you need. बेटा first of all तो आपके पास वोल्ट मीटर ही नहीं है, एम मीटर भी नहीं है, तो you will need that as well. You can say an M meter is needed to measure current, and a voltmeter is needed to measure voltage. Simple. आगे बढ़ते हैं बेटा। क्या लिखा हुआ है? Complete figure 4.1 to show a suitable circuit for measuring the resistance of a wire. अच्छा जी, आपने suitable circuit बनाना है. What will you do? Place an M meter in series. आपने एक M meter लगा देना in series.
And you have to place a voltmeter in parallel like this. वोल्टमीटर पैरेलल में प्लेस कर दिया, एमीटर सीरीज में प्लेस कर दिया. Okay. Explain briefly how to do the experiment, including the measurements to take so that the resistance can be determined. Okay. What will you do? क्या करोगे? Place the resistance wire in the circuit. Record the diameter. Place the resistance wire in the circuit and record the diameter. What will you further say? Measure the value of potential difference and current using ammeter and voltmeter. उसके बाद आप क्या कहोगे बेटा? Apply the formula. Resistance is equals to V over I to calculate the resistance. अब आपने रेजिस्टेंस निकाल ली यूजिंग द फॉर्मूला यूजिंग V ओवर I. अब क्या करोगे बेटा? Repeat the experiment for at least 5 different values of diameter. Repeat the experiment for at least 5 different values of diameter. Simple. अब क्या करेंगे भाई? अच्छा, स्टेट द की वेरिएबल्स टू कीप कांस्टेंट. क्या क्या चीज़ें आप कांस्टेंट रखोगे? लेंथ ऑफ द वायर कांस्टेंट होगा, मटेरियल ऑफ द वायर कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर ऑफ द वायर भी कांस्टेंट होगा थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट. सो यू कैन राइट दिस. द लेंथ of the wire material of the wire and temperature of the wire should remain constant throughout the experiment. Simple. What else will we do? क्या लिखा हुआ है? और draw a table and reach a conclusion. अच्छा जी, टेबल कैसे ड्रॉ होगा? Very, very easy. How will you draw a table? बेटा टेबल में फर्स्ट हेडिंग डायामीटर स्लैश meters. Secondly, you will have voltage slash V, current slash ampere, then resistance slash ohms. How will you reach a conclusion? You will say, draw a graph. Draw a graph of diameter against resistance. है ना, डायमीटर अगेंस्ट रेजिस्टेंस ही टेस्ट करने हैं हम. देखो यहाँ पे लिखा, यूजुअली सवाल में खुद ही लिखा हुआ होगा डायमीटर अगेंस्ट रेजिस्टेंस टू सी whether diameter affects resistance or not. Simple, easy peasy, lemon squeezy. If you have any questions, you can ask below in the chat.